ओके सो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फेशिया ऑफ द नेक। राइट, फेशिया ऑफ द नेक में फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर्स इन द नेक आर सराउंडेड बाय सुपरफिशियल fascia एंड देन दे आर फर्दर कंपार्टमेंटलाइज्ड बाय द डीप cervical fascia। राइट, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट वी हैव आवर स्किन, स्किन के बाद वी हैव आवर सुपरफिशियल fascia एंड देन वी हैव आवर डीप fascia। बट व्हाट दिस डीप fascia is doing, it is creating these compartments separating separating structures, right? एंड सुपरफिशियल fascia को हम ये भी बोल सकते हैं cervical subcutaneous tissue, right? इसी के अंदर हमारे पास क्या होता है? प्लेटिज्मा होता है। सो इट ओके, सो cervical cutaneous tissue या जो हमारी superficial fascia है, इसका दूसरा नाम, इसकी कौन कौन सी कंटेंट्स हैं? वी फर्स्ट हैव आवर cutaneous nerve, we have our blood vessels, lymphatic vessels, superficial lymph node, we have some fat, and then we have platysma which is present anterior laterally. Now here we have this picture, right? It is like the medial sagittal view, right? हमने इस पार्ट को लिया और उसको इधर बड़ा कर दिया है। यहाँ हम लोग देखें तो सबसे पहले सबसे पोस्टीरियरली आपके पास क्या आता है? हमारी वर्टिब्रा आती हैं, ठीक है ना? हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा आती हैं, उनके साथ जो है ना जो सब उनके साथ उनके एंटीरियर क्या मौजूद है? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, राइट? और उसके बाद हमारे पास ये क्या है? दिस इज द लॉन्गेस्ट कोलाई मसल, राइट? सो सबसे पहले हमारे पास आ गई सर्वाइकल वर्टिब्रा, देन द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, देन द लॉन्गेस्ट कोलाई मसल, देन आफ्टर दिस ब्लू वन क्या है हमारे पास? प्रीवर्टिब्रल फेशिया है। फिर उसके बाद प्रीवर्टिब्रल फेशिया के पास ये जो हमारे पास ये जो वाइट स्पेस है, ठीक है, जो वाइट स्पेस है ये हमारी क्या होगी? रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, ठीक है, ये सॉरी दिस इज आवर रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, राइट? ये वाइट वाला एरिया है। और फिर उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर की है ये क्या है हमारे पास? एलर फेशिया है, ठीक है। एंड देन दिस वी हैव दिस पिंक विच इज द बकोफेरेंजियल फेशिया, राइट? एंड देन वी हैव दिस इज आवर फेरेंजियल मसल एंड देन दिस इज फाइनली आवर फेरिंग्स, ठीक है। इंटीरियर मोस्ट क्या है? हमारा फेरिंग्स है। तो अगर आप देखें इसको इधर से देखें, सबसे पहले हमारी वर्टिब्रा आएगी, फिर उसके बाद जो है हमारा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट आ गया, फिर उसके बाद जो है हमारा लॉन्गेस्ट कोलाई मसल आ गया, फिर हमारी प्री वर्टिब्रल फेशिया दिस ब्लू वन ये आ गई, फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पेस आ गई, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोफेरेंजियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस, राइट? एंड देन स्पेस के बाद हमारे पास ये किसके बीच प्रेजेंट होती है? ये प्री वर्टिब्रल फेशिया और एलर फेशिया के बीच में क्या होती है? रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, राइट? एलर फेशिया के बाद हमारे पास आ जाएगी बकोफेरेंजियल फेशिया, दिस पिंक वन दैट यू कैन सी। उसके बाद हमारे पास फेरेंजियल मसल्स आ गए, दिस वन, एंड देन दिस इज फाइनली द फेरिंग्स, राइट? एंड देन अगर हम आगे बढ़ते हैं, इफ यू लुक एट दिस इन एन ट्रांसवर्स सेक्शन, ये सजाइटल व्यू था। नाउ इफ यू लुक एट द ट्रांसवर्स सेक्शन, आप देख सकते हैं, लाइक यू कैन सी first of all the superficial fascia, right? ये जो outermost fascia, this yellow colored is like the superficial fascia. It is surrounding the entire like it is surrounding all the structures, right, after the skin, right? इसके अंदर आप देख सकते हो there's some subcutaneous tissue, there are these platysma muscles, right? हमारा प्लेटिज्मा ये रहा, ये जो है ये प्लेटिज्मा, ये जो सॉरी ये वाले मसल्स है ना, दिस इज प्लेटिज्मा, इंटीरियर लेटरली प्रेजेंट है, ये भी यहीं है, ठीक है। यहीं पे हम बाकी हमारी चीज़ें भी होंगी, हमने जो सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल्स पढ़े थे, नर्व्स पढ़े थे, सुपरफिशियल लिम्फ नोड, सम फैट, ये सब इधर होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है दिस ग्रीन वन इज अवर investing layer of deep cervical fascia, right? Investing layer of deep cervical fascia, this is the pretracheal layer, this one, this is the pretracheal layer of the deep cervical fascia, right? And then this is our prevertebral layer of the deep cervical fascia, right? और फिर ये जो red में है हमारे पास, this is our carotid sheath, right? This is carotid sheath is connected with the alar fascia, is a continuation of the alar fascia. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्विकल फैशिया है, पोस्टीरियरली ये किससे अटैच्ड है? हमारे न्यूट्रल लिगामेंट से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इट इज़ ऑल्सो अटैच्ड टू दी स्पाइन, न्यूट्रल लिगामेंट से अटैच्ड है, इट इज़ अटैच्ड टू दी स्पाइनस प्रोसेसेस, राइट? एंड देन आफ्टर दैट वी हैव हियर फर्दर वी हैव हियर ओके, और ये कौन से मसल्स को जो है वो अपने अंदर इनकल्फ कर रही है, राइट? तो हमारी जो डीप सर्विकल, हमारी जो वर्टिब्रल, ये जो हमारी डीप इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्विकल फैशिया है, इट इज सराउंडिंग द ट्रेपीजियस मसल, ठीक है, पोस्टीरियरली, एंड दी स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंटीरियरली, राइट? तो किन दो मसल्स को कर रही है? ट्रेपीजियस और स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड को सराउंड कर रही है, ठीक है। उनके लिए ये जो है ये डिवाइड हो जाती है और उनको आगे पीछे से सराउंड करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये सारे मसल्स हैं हमारे जो है, ये मिडल स्केलीन है हमारा, ठीक है, ये हमारा इंटीरियर स्केलीन है, राइट? and this is our middle scalene, this is our anterior scalene, this is our posterior scalene, right? This is our longest colli muscle, ठीक है, जिसको हमने पीछे भी देखा था, this is our longest colli muscle, and then this is our omohyoid, right? This is sternothyroid, this is sternohyoid, right? तो सबसे पीछे पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है? सबसे पीछे हमारे पास क्या है? ओमोहायोइड है। फिर उसके बाद उससे इंटीरियर स्टर्नोथायरॉइड है, उससे इंटीरियर क्या है? स्टर्नोहायोइड है। फिर यहाँ पे हमारा ये रहा हमारा ट्रैकिया, ये रहा हमारा ट्रैकिया, ये रहा हमारा इसोफेगस, ठीक है।
फिर उसके बाद ये रहा हमारा थायराइड ग्लैंड, दिस इज अवर थायराइड ग्लैंड बेसिकली, दिस इज अवर ट्रैकिया, दिस इज अवर एसोफेगस, राइट। ये प्लेटिज्मा मैंने आपको बता दिया था जो सुपरफिशियल फैशिया में है। एंड देन वी हैव हियर कैरोटिड शीथ में हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स हैं, हमारी जो है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, हमारी इंटरनल जुगुलर वेन है, ठीक है, हमारी वेगस नर्व है, राइट। एंड देन वी हैव दीज लिम्फ नोड्स, राइट। और यहाँ पे हमने रेट्रोफेरेंजियल स्पेस भी दिखाई हुई है, राइट। दिस इज द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस बिटवीन द प्रीवर्टिब्रल फैशिया एंड द एलर फैशिया, राइट। यहाँ पे इन्होंने फिर से जो है वो हमें रेट्रोफेरेंजियल स्पेस दिखाई हुई है। अगेन वी हैव बीन शोन द कैरोटिड शीथ एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एलर फैशिया, राइट। एंड दिस इज दी, अच्छा, जो हमारी जो प्री ट्रेकियल लेयर है, ठीक है, प्री ट्रेकियल जो हमारी लेयर है उसकी दो पार्ट्स होते हैं, उसका एक विसरल पार्ट होता है, एक उसका मस्कुलर पार्ट होता है। वील बी डिस्कसिंग दैट आगे, ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डीप सर्विकल fascia, the investing layer, splits to enclose the trapezius and the sternocleidomastoid, just like I showed above. Then we have the pretracheal visceral layer, which encloses the muscles and the viscera in the interior neck. And then we have the musculoskeletal layer, which encircles the vertebral column and the associated muscle, right? तो जो प्रीट्रेकियल विसरल लेयर है वो क्या कर रही है, आपके जो है वो मसल्स और विसरा ऑफ द इंटीरियर नेक को कवर कर रही है, ठीक है। और फिर जो हमारी मस्कुलोस्केलेटल लेयर है, इट इनसर्कल्स द वर्टिब्रल कॉलम एंड द एसोसिएटेड मसल्स। फिर उसके बाद हमने लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड थायराइड ग्लैंड देख लिया, राइट। द इन्वेस्टिंग एंड प्रीट्रेकियल लेयर मस्ट बी इंसाइज्ड टू रीच देम। ये सब जो है in larynx, trachea and thyroid gland, they are present deep in the neck, so you will have to go through the investing and the pretracheal layers to reach them, right? फिर उसके बाद अगर हम प्लेटिज्मा की बात करते हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट प्लेटिज्मा, इट इज द सबक्यूटेनियस टिश्यू, इट इज प्रेजेंट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द नेक, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसेनकाइम इन द सेकंड फेरेंजियल आर्च, राइट। सो वी नीड टू रिमेंबर दिस। इसका ओरिजिन क्या है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम द मेसेनकाइम इन द सेकंड फेरेंजियल आर्च, इट इज सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व 7, द एक्सटर्नल जुगुलर वेन, and it is supplied by the external jugular, it is drained by the external jugular vein, ठीक है ना, descending from the angle of the mandible to the middle of the clavicle, right. So it is supplied by the facial nerve and it is drained by the external jugular vein. As we can see, this is our platysma, right. It is supplied by the facial nerve 7, right. This is our platysma, right. Here we, then we can see platysma covers the anterior lateral aspects of the neck, ठीक है, and it joins up, like as it moves up, it joins with the facial muscle, it blends with the facial muscle, but यहाँ पे it has left some space, right. This space stays, यहाँ पे हमारे जो है वो thyroid gland, हमारी larynx, trachea वगैरह ये सब आए थे। Platysma covers the deep fascia covering the superior parts of the deltoid and the pectoralis major, right. तो इसके fibers कहाँ से arise हो रहे हैं, from the superior parts of the deltoid and the pectoralis major muscle, right. Inferiorly the fibers diverge, leaving a gap anterior to the larynx and trachea, just like I said, supplied by the cervical branch of the cranial nerve 7, right. और ये कहाँ से इसका embryonic origin था, from the second pharyngeal arch of the mesenchyme, राइट। एंड देन प्लेटिज्मा टेंस, अच्छा अगर उसके हम फंक्शंस पढ़ें, फंक्शंस क्या है, राइट। फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्लेटिज्मा टेंसेस द स्किन, राइट। ये स्किन को खींचता है, ठीक है। तो जैसे आप ऊपर देखते हैं फोर्सफुली, इट प्रोड्यूसेस वर्टिकल स्किन रिजेस एंड रिलीजिंग प्रेशर ऑन द सुपरफिशियल वेन्स, एज व्हेन लाइक व्हेन यू आर शेविंग और व्हेन यू आर लुकिंग अप, राइट, यू आर डूइंग दीस chin exercise, neck exercises, like when you pull your skin up of the neck, okay, when you stretch your neck, that is basically platysma acting. Like when shaving, when easing the tightening collars, right. Platysma helps depress the mandible and draw the corners of the mouth inferiorly as in a grimace. Like when you're sad, the expression when the corners of your mouth are drawn inferiorly, right, and you depress your mandible, that facial expression is done by the platysma. Platysma serves to convey tension or stress. This is its function as a muscle of facial expression. फिर उसके बाद हमारे पास चलती है डीप सर्विकल फैशिया। अगर हम डीप सर्विकल फैशिया को देखें तो देयर आर 3 fascial layers, right. They may be separated during the surgery, tissues may be separating during the surgery, right. 3 fascial layers है, उसमें से जो these 3 fascial layers are compartmentalizing, okay, the different components of the different components present of the neck, right. तो इस वजह से हमारी सर्जरी के अंदर हम कह सकते हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए, हमें जहाँ सर्जरी करनी है हम उसी कंपार्टमेंट को जो है वो मतलब उसी कंपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे, राइट, एंड वील स्पेयर द अदर कंपार्टमेंट्स। दिस कैन ऑल्सो हेल्प लिमिट द स्प्रेड ऑफ एब्सेसिस। कोई इन्फेक्शन भी होता है, जैसे वो एक कंपार्टमेंट में होता है तो वो दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं स्प्रेड करेगा। ऑल्सो अफोर्ड द स्लिपरीनेस दैट अलाउज स्ट्रक्चर्स इन द नेक टू मूव एंड पास ओवर वन अनदर विदाउट डिफिकल्टी, राइट। इट ऑल्सो ईजेस इन lubrication, you could say, like allows free movement, it allows swallowing and turning of the head and neck. Investing layer of the deep cervical fascia, right, it is the most superficial deep facial layer, right. It encloses what, trapezius and the sternocleidomastoid muscle, we just हमने ऊपर देखा अभी, innervated by the cranial nerve, cranial nerve 11, right. It is innervated by the cranial nerve 11, which is also known as the spinal accessory nerve. Okay, spinal accessory nerve, cranial nerve 11 innervates this, right. अगर हम इसकी attachments देखें, right,
So if you look at this, it says superiorly it attaches to the superior nuchal line, like we can see over here, right? It attaches to the superior nuchal line over here, right? Then it attaches the mastoid process of the temporal bone, ठीक है? Then it attaches to the zygomatic arches, inferior border of the mandible, hyoid bone and spinous processes of the cervical vertebrae. राइट तो पीछे पोस्टीरियरली और सुपीरियरली आप कह सकते हो कि इट अटैचेस टू द न्यूट्रल लाइंस ऑफ द ऑक्सिपिटल बोन, ठीक है, द सुपीरियर न्यूट्रल लाइन, राइट. Then after that it attaches to the mastoid process of the temporal bones laterally. Then as you come further down towards the face, it attaches to the zygomatic arches. Then it attaches to the inferior border of the mandible and then the hyoid bone and the spinous processes of the cervical vertebra posteriorly, right? So basically it is surrounding the entire neck. It encloses the submandibular gland as well as the parotid gland, right? As well as the parotid gland. It forms the fibrous capsule of the parotid gland. The stylomandibular ligament is a thickened modification of this fascial layer which is between the mandible and the styloid process of the temporal bone. Then after that, inferiorly, the investing layer of deep cervical fascia attaches to the manubrium of the sternum, clavicles, acromions, and spine of the scapula. Basically, like the entire shoulder, right? It attaches to the entire shoulder because we first have here the sternum, then the clavicle, then our acromions, the spines of the scapula. So it attaches to the entire thing here. So I'm sorry with my drawing, right? And then it's continuous posteriorly with the spinous C7 covering the C7 spinous processes. So 1 to 7, C1 to C7 spinous processes. Right, and the neutral ligament, right, and the superior neutral lines of the occipital bone. Investing layer of deep cervical fascia remains divided into two layers to enclose the sternocleidomastoid, right? One layer attaches to the anterior, another to the posterior surface of the manubrium, right? हमने ऊपर देखा था कि it attaches like यहाँ जहाँ पे इसने enclose करना होता है इधर trapezius और sternocleidomastoid को, it splits, it's okay, it splits into two. तो जब ये splits into two होती है, एक anterior surface पे attach होता है, एक posterior surface पे attach होता है, किसके? manubrium of the sternum, right? manubrium of the sternum पे attach करता है. Right, a suprasternal space lies between these two layers, anterior and posterior layers. Inferior ends of the anterior jugular veins, jugular venous arch, fat and few deep lymph nodes. इस suprasternal space में हमारे पास क्या क्या contents होते हैं? हमारे पास होते हैं जो anterior jugular vein है ना, उसका नीचे का हिस्सा होता है, उसका inferior part होता है. हमारे पास हमारा jugular venous arch होता है जहाँ से हमारी जो है वो internal and external jugular vein आके मतलब attach हो रही होती हैं, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे drain कर रही होती हैं. फिर हमें fat मिलता है, हमारे few deep lymph nodes हमें मिलते हैं. Then we have the pretracheal layer of the deep cervical fascia. Pretracheal layer is a thin layer, right? It is limited to the anterior part of the neck. वो क्या पिछली वाली जो थी investing layer was surrounding like the entire neck, but this is limited to the anterior part of the neck from the hyoid bone into the thorax. It extends inferiorly from the hyoid bone into the thorax. It blends with the fibrous pericardium covering the heart, right? तो hyoid से लेके ये thorax तक जाती है. thorax में कहाँ तक? Blends with the fibrous pericardium which covers your heart. It has a thin muscular part which encloses the infrahyoid muscles, right? hyoid से ये pericardium तक जा रही है, right? तो hyoid से नीचे के muscles कौन से होते हैं? infrahyoid muscles. So it encloses the infrahyoid muscles, okay? And this and the pretracheal muscular part encloses the infrahyoid muscle, and the visceral part, it encloses the thyroid gland, the trachea and the esophagus, basically the viscera of the neck, anterior part of the neck. It is continuous posteriorly and superiorly with the buccopharyngeal fascia which surrounds the pharynx, right? अगर हम ऊपर से देखें और अगर हम उसके posterior जाएं, interior पे तो हमारे पास thyroid gland, trachea और esophagus आ गए, right? मगर अगर हम उसके posterior जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? buccopharyngeal fascia आ जाती है, right? तो anteriorly हमारे पास क्या था? इसका visceral part था which was enclosing these visceras, and then इसके इस layer के पीछे क्या होती है? हमारी buccopharyngeal fascia which is surrounding our pharynx, right? It blends laterally, posteriorly भी और superiorly भी, क्योंकि pharynx in structure से ऊपर होता है. Then after that the pretracheal layer of deep fascia blends laterally with the carotid sheaths, right? It blends with the carotid sheaths. Okay, it then blends with the carotid sheath. Superior to the hyoid, a thickening of the pretracheal fascia forms a pulley or trochlea through which the intermediate tendon of the digastric muscle passes, suspending the hyoid. Right? तो इसके अंदर हमने जो है वो देख लिया. Posteriorly तो ये किसके साथ थी? Buccopharyngeal fascia of the pharynx के साथ थी, right? It blends, the pretracheal layer of deep fascia blends laterally with the carotid sheath. Posteriorly and superiorly buccopharyngeal fascia थी और laterally किसके साथ blend करेगी? carotid sheath के साथ. inferiorly ये किसके साथ continuous है? fibrous pericardium के साथ. और anterior most ये खुद है, ठीक है. It is superior to the hyoid, a thickening of the superior to the hyoid क्या करती है? अच्छा, ये hyoid से लेके pericardium तक थी ना, fibrous pericardium तक. तो hyoid के ऊपर भी जो है ना ये एक छोटा सा ये बना देती है, एक ना trochlea सा बना देती है जिससे जो intermediate tendon of the digastric muscle है ना वो उससे pass करता है. And that in this tendon it suspends the hyoid. The pretracheal layer also tethers the two-bellied omohyoid muscle, right? So it is tethering to digastric muscle as well as the omohyoid muscle. Omohyoid भी हमने ऊपर देखा था. ये जो
जो था ये हमारा omohyoid था. This was our omohyoid, and you could see this is like close to it. Right, and then after that we have our pretracheal layer of the prevertebral layer of our deep cervical fascia. The prevertebral layer of the deep cervical fascia forms a tubular sheath. Okay, it forms a tubular sheath for the vertebral column. Right, it is associated with longus colli muscle, longus capitis, scalenes, and then we have the deep cervical muscles posteriorly. तो अगर हम अपने देखें ये पोस्टीरियरली आ रही है, वो क्या थी, जो हमारी प्रीट्रेकियल थी, that was anterior, right, and this one is what, it is posterior, right, and तो ये posteriorly जो हमारी vertebral column के साथ जो associated muscles हैं कौन से हैं वो, एक तो हमने longus colli देखा था जो कि बिल्कुल जो है वो मतलब anterior to vertebral column था, longus capitis होगा हमारे पास, scalenes हमारे मौजूद थे, ठीक है, हमने ऊपर इधर scalenes भी अपने देख लिए थे, right, we have our scalenes here, we have our anterior scalene, middle scalene and our posterior scalene, right, so we have this anterior scalene, right, anterior scalene, middle scalene, and our posterior scalene. We have our longus colli here, right, we have our longus capitis as well, okay, and then after that we also have other deep muscles, right, it is fixed to the cranial base superiorly. अगर हम इसको superiorly देखें किसके साथ fixed है, cranial base के साथ, inferiorly it blends with the endothoracic fascia peripherally and fuses with the anterior longitudinal ligament centrally at approximately the T3 vertebra, right, ऊपर से तो cranial base के साथ attach हो गई, peripherally या आप बोल सकते हैं जब वो नीचे आती है तो वो किसके साथ fuse कर जाती है, आपकी endothoracic fascia, the fascia of your thorax, right, उसके साथ fuse कर जाती है, और आप अगर anteriorly देखो तो वो anteriorly किसके साथ fuse कर जाती है, the anterior longitudinal ligament, right, and then after that anterior longitudinal ligament के साथ वो centrally fuse तो करती है, मगर किस point के ऊपर, at the point of T3 vertebra. It extends laterally as the axillary sheath. Laterally वो कैसे extend हो रही है, as the axillary sheath surrounds the axillary vessels and as well as the brachial plexus. The cervical parts of the sympathetic trunks are embedded in the prevertebral layers. Right, this okay, so here we can see the carotid sheath, the retropharyngeal space, right, this was our prevertebral fascia, right, prevertebral fascia, this is the retropharyngeal space, this is our carotid, this is our alar fascia, and this is our carotid sheath, this is our carotid arteries, this is our internal jugular vein, right, this is our jugular veins, this is our deep cervical lymph, this is our nerve, right, this is our vagus nerve, right, and these are the deep cervical lymph node. As we can see over here, we have our common and internal carotid arteries, internal jugular vein, vagus nerve, and then we have some deep cervical lymph node. We have the carotid sinus nerve as well as the sympathetic nerve fibers, which contribute to the carotid periarterial nerve plexus. The carotid sheath communicates with the mediastinum of the thorax inferiorly and extends to the cranial base the occiput superiorly. Potential pathways for the spread of infection. Right, ओके सुपेरियरली तो हमने बोला कि क्रेनियल बेस से अटैच थी, हमने इंफीरियरली हमने बोला इमर्ज करी एंडोथोरैसिक फैशिया के साथ, राइट, और सामने से सेंट्रली एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के साथ. इंफीरियरली क्या करती है, इंफीरियरली जो है ना, इट कम्युनिकेट्स विद द मीडियस्टाइनम ऑफ द थोरैक्स, सो वी कैन से इट इज अ पोटेंशियल पाथवे फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, राइट. देन वी हैव रेट्रोफेरेंजियल स्पेस. इट इज द लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्राफेशियल स्पेस इन द नेक. इट इज अ पोटेंशियल स्पेस मतलब बहुत कम है, राइट. इट इज हार्डली एनी स्पेस, कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द प्रीवर्टेब्रल लेयर ऑफ डीप cervical fascia and the buccopharyngeal fascia, right. तो प्रीवर्टेब्रल फैशिया एंड दी प्रीवर्टेब्रल फैशिया ठीक है पोस्टीरियरली है हमारी, उसके आगे जो है इंटीरियरली बकोफेरेंजियल फैशिया विच इज सराउंडिंग द फेरिंग्स, राइट, और इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या आती है, रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, राइट. इट इज इंफीरियरली द बकोफेरेंजियल फैशिया इज कंटिन्यूस विद द प्रीट्रेकियल लेयर ऑफ द डीप सर्विकल फैशिया, राइट. इंफीरियर ये बकोफेरेंजियल फैशिया नीचे जाके क्या हो जाती है, प्रीट्रेकियल लेयर के साथ ये मर्ज कर जाती है, ठीक है, तो ये उसी का पार्ट बन जाती है. एलर फैशिया की अगर हम बात करें, इट फॉर्म्स अ फर्दर सब डिवीजन ऑफ द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस. अच्छा, अब ये जो हमारी रेट्रोफेरेंजियल स्पेस थी ना, उसको सब डिवाइड कौन कर रहा है, एलर फैशिया. दिस थिन लेयर इज अटैच्ड अलोंग द मिडलाइन ऑफ द बकोफेरेंजियल फैशिया फ्रॉम द क्रेनियम टू द लेवल ऑफ द C7 वर्टेब्रा. फ्रॉम दिस अटैचमेंट इट एक्सटेंड्स लेटरली एंड टर्मिनेट्स एज द कैरोटिड शीथ. तो एलर फैशिया कहाँ से लेके कहाँ तक आ रही है, क्रेनियम से लेके C7 वर्टेब्रा तक एलर फैशिया जो है वो मौजूद होती है, ठीक है. इट अटैचेस अलोंग द मिडलाइन ऑफ द बकोफेरेंजियल फैशिया. इट सब डिवाइड्स द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस and this space is closed superiorly by the cranial base obviously and on each side by the carotid sheath, right. It terminates at C7 vertebra as the carotid sheath. It opens inferiorly into the superior mediastinum.